इन्फ्लेमेशन जहाँ खत्म किया था वहां पर छोटी सी हेडिंग होगी, डिस्प्लेशिया एनाप्लेशिया के नीचे। तो proto-oncogene means if you stimulate them, it will cause cancer. So they ask you what are the important proto-oncogene. So starting with the first proto-oncogene is RAS, and second important will be MYC. RAS, MYC. Then we have RET gene. RET gene. Okay, RAS के there are three members of RAS family: KRAS, HRAS, NRAS. Similarly, in MYC we have CMYC, LMYC, and MYC. HGF. HGF is hepatocyte growth factor. Hepatocyte growth factor. CD kit. CD kit. ओके, so let's start. केरास, केरास किसके लिए होता है? ओके, अब इसको समझो एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज मोस्ट कॉमन प्रोटो ऑन्कोजीन, आंसर इज रास. बट इफ आई आस्क यू विच इज मोस्ट कॉमन जीन, देन आंसर विल बिकम P53. सो केरास इज कोलोन कैंसर. के से के, आज से कोलोन के से, कोलोन कैंसर. एच रास, इट इज फॉर ब्लैडर एंड किडनी कैंसर. ब्लैडर एंड किडनी कैंसर. एन से पहले क्या था? Before N, you will see M. So it is for melanoma. C से पहले क्या आएगा? This is Burkitt lymphoma. L for lung cancer. Which lung cancer? Small cell, also called as oat cell. And N for N, neuroblastoma. Neuroblastoma. Ret gene, it will cause MTC. MTC means medullary thyroid carcinoma. Just remember, MTC is a part of which syndrome? MEN 2A and MEN 2B. Hepatocyte growth factor, it will cause HCC. And CD kit mutation is seen in GIST. What is GIST? Gastrointestinal stromal tumor. ERBB1. ERBB2. This is also called as HER2/neu. So this is for lung cancer, and HER2/neu is for breast cancer. So these are some important proto-oncogene. Proto-oncogene. So proto-oncogene, understand, their stimulation will cause cancer. So out of this, for exam purpose, just remember first three. These three are very, very important. बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं. RAS, MYC, RET. These three are extremely important. Now coming to tumor suppressor gene, means कैंसर कब होगा? जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे. So their inactivation will cause cancer. ऊपर देखो. Now see, proto-oncogene, when you activate them, it will cause cancer. So here understand, we need to inactivate them. Suppose if I inactivate this one copy of tumor suppressor gene, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. Nothing will happen. So cancer will occur only when you inactivate both copies. And this is called as Knudsen two-hit hypothesis. Knudsen two-hit hypothesis means for a cancer to occur, both copies must be inactivated.
both copies must be inactivated. So what are the examples of tumor suppressor gene? Most common and most important is P53. Then we have RB gene, BRCA1, BRCA2, NF1, NF2, NF1, NF2, BRCA1, BRCA2. So बताओ P53 understand it's involved in many cancer. This is most common gene involved in cancer. Then I can say it is most common tumor suppressor gene. This P53 mutation, it is seen in a syndrome called Lee-Fromeny syndrome. ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम में पेशेंट को अलग अलग जगह के कैंसर होते हैं, like some sarcomas, breast cancers, some colon cancer. Okay, now coming to RB gene. RB gene, they ask you chromosome location, it is 13q14. P53 is at 17. So 13q14, understand? RB gene mutation will cause retinoblastoma. Blastoma means immature. So remember, all blastoma will occur in children. अब ऊपर समझो, ऊपर देखो. Suppose a baby who is having familial form of retinoblastoma, then this baby will have risk of two more cancer, osteosarcoma, and third will be pinealoblastoma. ऊपर देखो, क्वेश्चन देखो. Most common second tumor seen in survivor of retinoblastoma. Answer is osteosarcoma. तो ऑस्टियोसार्कोमा के पेशेंट, रेटिनोब्लास्टोमा पेशेंट को और क्या हो सकता है? ऑस्टियोसार्कोमा. BRCA1, both will cause breast cancer and both will cause ovary cancer. दोनों में ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के चांस होंगे. जैसे मेंबर BRCA2 will also cause male breast cancer. ओके, इसको ऐसे याद रखो. एंजेलिना जोली, she had BRCA1 mutation. Which surgery she had? Bilateral mastectomy and total abdominal hysterectomy. Total abdominal hysterectomy means it is removal of uterus, and bilateral salpingotomy means tubes. So understand this thing. तो अंजना जोली का ओवरी, यूट्रस, fallopian tube सब कुछ निकलवा लिया था उसने, because family is complete, because she had this mutant variety. Even though she was not having ovary cancer, but still ovaries were removed. That was for prophylaxis. तो एंजेलिना जोली के हस्बैंड का नाम क्या है? था. कब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे. ब्रैड पिट. सो बी से ब्रैड पिट, बी फॉर ब्रेस्ट कैंसर. NF1, NF2. Now see, both will cause neurofibromas. Both will cause neurofibromas. Then how we differentiate? NF1 patient will have optic nerve glioma. NF2 patient will have meningioma and schwannoma. देखो अभी रिसेंट नेट पे जी क्वेश्चन ऊपर देखो. What is most common genetic mutation seen in meningioma patient? देखो जनरली meningioma mutation नहीं होता. So answer is NF2 mutation. This is about your some important tumor suppressor gene. What is paraneoplastic symptom? कुछ याद आ रहा है? It is called Dowd effect, or you can say Bishnoi effect. ये रवि बिश्नोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई है. So what is Dowd effect or Bishnoi effect? Understand this thing. Cancer cell produce effect in some other organ without metastasis. Normally suppose कैंसर क्या करेगा? मेटास्टाइज करेगा दूसरे ऑर्गन में जाके.
But if you see cancer cell is producing effect in other organ without metastasis, बिना जाए, जैसे कि बिश्नोई मर्डर करवा रहा है जेल में बैठे बैठे, बिना जाए, we call this paraneoplastic symptom. So they ask you, what are these symptoms? SIADH, Cushing, and LAMS. What is LAMS? Lambert-Eaton myasthenia syndrome. So these three are seen with small cell lung cancer. So they ask you which cancer produce maximum paraneoplastic symptom? Small cell lung cancer. Hypercalcemia. Hypercalcemia you will see in squamous cell carcinoma of lung. Squamous cell carcinoma of lung. Hypercalcemia seen in squamous cell carcinoma of lung. Then remember polycythemia. Polycythemia means RBC, WBC platelets सब ज़्यादा होंगे. It is seen in RCC, renal cell carcinoma. तो जनरली पेपर में आपसे ये पूछते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर. ओके, नाउ कमिंग टू माइक्रोबियल कार्सिनोजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक. यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा और इस बार भी आएगा, 100% चांस. तो ये गलत नहीं होना चाहिए. सो विच आर द माइक्रोब्स विच कैन कॉज कैंसर? व्हाट आर द वेरियस माइक्रोब्स? तो स्टार्ट करते हैं. ओनली वन बैक्टीरिया विच कैन कॉज कैंसर इज एच पाइलोरी. कौन सा कैंसर कराता है? तो मोस्ट कॉमन विल बी एडेनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, and second it can causes maltoma. Two parasites, first is clonorchis sinensis, clonorchis sinensis, also called as Chinese liver flu. Second is cystosoma. So we have cystosoma hematobium, cystosoma mansoni. Clonorchis sinensis will cause cholangiocarcinoma, and this will cause urinary bladder cancer. So these are two parasites. Then there is a list of viruses which can cause cancer, and these viruses are very very important. तो बताओ कौन कौन से वायरस कैंसर कराते हैं? Let's start with the easy one. Easy one, HPV, serotype 16, 18. What they will cause? Cervix cancer. और कोई कैंसर कर सकते हैं? They can cause anal cancer. They can also cause oral cancer. They can cause head and neck cancer. सपोज पेशेंट को सर्विक्स कैंसर है और एचपीवी से नहीं है, किसी और वायरस से हो सकता है. HSV2. ऊपर देखो, herpes simplex virus 1, above the waist, 2 below the waist, HSV2. मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट आया था. So it was initially like an ulcer and purulent discharge from penis. He was denying history of any sexual intercourse. So initially I thought it could be urethritis. It could be gonococcal or non-gonococcal. So empirical antibiotic was started. After 5 days he came back. Then he's giving a proper history. So HSV2 detect हुआ था. How you will manage? We will give acyclovir, valacyclovir और वेल्गन साइक्लोविर, और acyclovir की ऑइंटमेंट भी आती है, इसकी ऑइंटमेंट भी आती है. तो दिस इज HSV. It is an STD. What else? We have hepatitis B virus and hepatitis C virus. Hepatitis B virus and hepatitis C virus. What it will cause? HCC. Okay, next virus.
EBV, एप्स्टीन बार वायरस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्या क्या कराता है। इट विल कॉज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। व्हाट एल्स? Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin lymphoma. Sometimes they will not give you non-Hodgkin, they will give you Burkitt's. Anything else? और कुछ कराता है? यही तो भूल जा रहे हो बार बार। नहीं, कैंसर पहले, कैंसर उसके बाद। जो तुम बोल रहे हो वो यहाँ लिख दिया मैंने, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, किसिंग डिसीज। एनीथिंग एल्स? DLBCL इज अ टाइप ऑफ नॉन-Hodgkin। और कुछ कराता है जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में? ये भी आया हुआ है, दो क्वेश्चन। टू मोर थिंग्स इट विल कॉज। जैसे फेंजल ऊपर हो गया, बताओ। टू थिंग्स मोर विथ बीवी, बताओ। इट विल कॉज प्राइमरी CNS लिम्फोमा in AIDS patient. Primary CNS lymphoma in AIDS patient. One more thing, बताओ। कपोई सार्कोमा, कप HHV8 कपोई सार्कोमा वायरस से होगा। इससे क्या होगा? पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा। दिस वाज लास्ट ईयर नीट PG क्वेश्चन। पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा। और अगर आप देखोगे पुराने पेपर, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। EBV is very very important. Epstein Barr virus. Okay, now let's talk about KSV. What is KSV? Kaposi sarcoma virus, also called as HHV8. HHV8, बताओ क्या करेगा? Kaposi sarcoma, Kesselman disease, Kesselman disease, and very very important. This was last year FMG question. Primary effusion lymphoma. कौन सा वायरस बच गया? HTLV1. Adult T cell leukemia. Adult T cell leukemia is caused by HTLV1. So these are called oncogenic viruses. Viruses which can cause cancer. Viruses which can cause cancer. Okay, now let's understand. They ask you question on tumor marker. Tumor marker means suppose a person is having cancer, then something will increase in his body. उसके ब्लड में कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर. सो स्टार्टिंग फर्स्ट विथ ALP. ALP is alkaline phosphatase. It is actually a non-specific marker, so nobody will ask you. So alkaline phosphatase can increase whenever you are having some like metastasis in bone or liver or Paget disease of bone and seminoma. Then very very important is NSE. NSE is neuron specific enolase. Neuron specific enolase. Understand? इसको समझो एक बार. It is a marker for neuroblastoma, small cell carcinoma, and even some carcinoid also we can diagnose with this. So these three tumors, actually these are neuroendocrinal tumor. So it is a marker of neuroendocrinal tumor, and most important neuroendocrinal tumor is small cell lung cancer. Small cell lung cancer. So they can ask you this question, already came in exam, आ चुका है एक बार already. Neuron specific enolase. ऊपर देखो. Small means, small means nunu. नोनो मीन्स न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस. याद हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा ना. चलो आगे चलो. कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस एंड देयर मेटाबोलाइट्स. व्हाट आर देयर मेटाबोलाइट्स? बताओ. VMA एंड मेटानेफ्रिन्स. VMA एंड मेटानेफ्रिन्स. These are for pheochromocytoma. Prostate specific antigen, prostatic alkaline phosphatase. So नाम में ही prostate है, prostate cancer. Simple. Chromogranin.
It is for neuroendocrine tumor like carcinoid. Carcinoembryonic antigen, just remember colon cancer. This is the most specific marker for colon cancer. Now coming to CA, CA15, CA19, CA125, CA15, CA19, CA125. देखो अब ध्यान से। पीछे का नंबर छोड़ दो। सपोज, now look at me. If you see numbers, पहले 15 आता है, फिर 19, फिर 125. Similarly, when you see a female body, 15, 19, 125. 15, breast, 19, colon pancreas, 125, ovaries, 15, breast. अरे यार, आवाज याद हो जाएगा। तो 15, 19, 125। AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स, योक सैक ट्यूमर एंड HCC। दोनों क्वेश्चन कई बार आए। Now beta HCG. Beta HCG is a marker for hydrated disease, or I can say we call it hydrated form mole. Partial mole means molar pregnancy, complete mole, partial mole, कोरियोकार्सिनोमा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कोरियोकार्सिनोमा where it metastasize. The most common site of metastasis will be lungs. It will metastasize to lungs. So these are important tumor marker. अब देख लो ध्यान से, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, very very important. This is something which is very very important. Tumor markers. पिछले 10 साल से, 10 year, there is one question on this table. Means 20 attempts, I am telling you, there is always a question. Now there are three pattern of question. First look at the pattern of question which they ask in exam. First pattern is simple one liner. One liner means they will ask you like von Willebrand disease is having which mode of inheritance, or familial hypercholesterolemia which mode of inheritance. Second, they ask you second type of question is all except. All except means all are autosomal dominant except. लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है क्लिनिकल केस। पहले एक केस देंगे, फिर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, अ 5-year-old boy is having increased uric acid. Serum uric acid level is 15. This boy is sometime plucking his own hairs and nail out of the body. डायग्नोस समझ में आ गया। हाइपरयूसीमिया, सेल्फ म्यूटिलेशन, इट इज लीशनियान एंड लीशनियान इज। तो अब देखो ये आपको पढ़ना है बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी। जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच केम इन एग्जाम। लीशनियान केम इन एग्जाम, हीमोफिलिया ए केम इन एग्जाम। ऊपर देखो, व्हाट आर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। All lysosomal storage disease are autosomal recessive except Hunter and Fabry. Except Hunter and Fabry. So बाकी सब किस में आएंगे देखो इधर, कहीं लिखा है इधर lysosomal storage disease. So what are these two exception? Hunter and Fabry. Hunter Fabry are XLR. Okay, now see hemophilia A को क्या बोलते हैं?
Hemo, classical hemophilia. Hemophilia B is called as Christmas disease. Hemophilia C, it is autosomal recessive. Hemophilia C is called as Rosenthal syndrome. Rosenthal syndrome. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. What is Rosenthal syndrome? Hemophilia A is classical, B is Christmas. CGD, CGD पढ़ा था कहीं? ये फुल फॉर्म नहीं तो लिखा ही हुआ है. NADPH oxidase deficiency. NADPH oxidase deficiency. CGD से एक क्वेश्चन पूछते हैं. How we make a diagnosis for this? Which test we do? Nitrogen blue tetrazolium test. Second is DHR test. Nitrogen blue tetrazolium test और dihydrorhodamine test. G6PD ये लास्ट अटेम्प्ट में आया था. डुशीन एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में नहीं, किस में है? अभी 15 दिन बचे हैं, किस में है? D for don't, Duchenne don't make dystrophin. B for bad quality dystrophin. एक में बिल्कुल नहीं है, मीन्स Duchenne में बिल्कुल नहीं है, बेकर्स में क्वालिटी खराब है. तो व्हाट इज बेटर? Beckers. Something is better than nothing. Duchenne is more severe. These two condition patient will use hand support to stand. We call this Gover's sign. Diabetes insipidus, then color blindness. A gamma globulinemia, इसको बोलते हैं Bruton's disease. Bruton's disease. Then we have fragile X syndrome, Viscott Eldridge syndrome. इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ. विस्कॉट की स्पेलिंग हॉट, एल्ड्रिच. तो हॉट मीन्स फीवर, इचिंग मीन्स इचिंग. इचिंग क्यों होगी? बिकॉज ऑफ डर्मेटाइटिस. एंड पेशेंट विल हैव लो प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. दिस इज ट्रायड ऑफ विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. फीवर, इचिंग, thrombocytopenia. It is triad of Viscott-Eldridge syndrome. It is due to WASP gene mutation. Fever, itching, thrombocytopenia. अब इसको देखो. Ocular albinism. It is X-linked recessive. Simple albinism. Autosomal recessive. Homocystinuria. होमोसिस्टिनूरिया कहीं पढ़ा था हमने? बताओ. अगर किसी को होमोसिस्टिनूरिया है, व्हाट इज द रिस्क? क्या रिस्क होगा इस पेशेंट को? इस्केमिक हार्ट डिसीज मीन्स इनको एमआई एंजाइना होगा. These patient will develop B12 deficiency, they will develop B9 deficiency, and there is a chance this was latest INI-CET question. These patients are also at risk of diabetic retinopathy. ये मैंने पढ़ाया था आपको diabetic retinopathy में. Homocystinuria, thalassemia came in exam, sickle cell anemia came in exam, adrenal hyperplasia came in exam. एक और आया था pediatrics question. Acrodermatitis centropathica. So this is due to zinc finger region defect. This is also having autosomal recessive inheritance. तो कम से कम जो आ चुके हैं वो तो पढ़ लो. Now coming to alkaptonuria, बताओ biochemistry. Deficiency of which enzyme? Homogentisate oxidase. Homogentisate oxidase. Okay, इसका बताओ लिस्ट नहीं. Deficiency of which enzyme? Hypoxanthine guanine phosphoribositol transferase. Hypoxanthine guanine phosphoribositol transferase. Okay, then Wilson disease came in exam. Alpha 1 antitrypsin came in exam. Hemochromatosis came in exam. Cystic fibrosis came in exam. Phenylketonuria came in exam. Deficiency of which enzyme?
फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेस। गैलेक्टोसी में बताओ किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है? जी पुट डेफिशिएंसी। विच टाइप ऑफ कैटरेक्ट? ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट। ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट। डन। This is autosomal recessive. And I told you these diseases are commonly seen. These are commonly seen where? In consanguineous marriage. Consanguineous marriage means marriage between close blood relative. So अगर close blood relative में शादी होती है, then there is a chance of which disorders? Autosomal recessive. Okay, now coming to X-linked dominant. X-linked dominant, what they ask you, this is called as vitamin D resistant rickets. L-Port syndrome, Rett syndrome. L-Port syndrome, Rett syndrome. L-Port तो पढ़ा होगा आपने कहीं, बताओ क्या होता है? तो पेशेंट विल हैव एंटीरियर लेंटिकोनस, आंख में कौन बनेगा? SNHL एंड ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, हेमाचूरिया बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस. नाउ व्हाट इज रेट सिंड्रोम? व्हाट इज रेट सिंड्रोम? इट्स अ टाइप ऑफ ऑटिज्म. ऑटिज्म देखो, जनरली ऑटिज्म इज व्हाट यू विल सी दीस चिल्ड्रन, दे विल हैव सिवियर लैंग्वेज इंपेयरमेंट. So there are two special form of autism. तो नॉर्मल ऑटिज्म के बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते. दे आर लाइक इंडल्जिंग, सपोज इफ यू गिव देम समथिंग टू प्ले, इससे खेलते रहेंगे पूरे दिन भर. So they are socially isolated. They have speech problem. So two special form. One is called as intelligent autism. Intelligent form. Second is called as foolish form. Foolish form. This intelligent form of autism, understand they have their IQ is slightly decrease. Slightly decrease. In foolish form, you will see IQ is very low. This intelligent form you will see in boys. In foolish form you will see in girls. तो मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ. This intelligent form is called as Asperger syndrome. So these patients, understand, they will have slightly low IQ and a unique thought indulging in their brain again and again. Example, my name is Khan. Nearly normal IQ. This is foolish form. These patients, they will have small skull. What we call this? Microcephaly. पिछले 2 साल से नीट पीजी में रेट सिंड्रोम के पीछे पड़ गए. आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, बट दे आर आस्किंग यू इन नीट पीजी. सो व्हाट इज द ड्रग वी यूज? वी हैव ओनली वन ड्रग इन दिस कंडीशन. ट्रोफेनेटाइड. 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 दिस इज फॉर रेट सिंड्रोम. डन. एम आई क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. वल्गैरिस का मतलब होता है मोस्ट कॉमन. इक्थियोसिस वल्गैरिस मींस पेशेंट विल हैव क्रोकोडाइल लाइक स्किन. Familial retinoblastoma we have discussed, RB gene. Then hereditary spherocytosis, Huntington chorea, tuberous sclerosis, achondroplasia. Achondroplasia क्या होता है? What is achondroplasia? So these people, they will have a normal truncal height. Truncal height normal होगी, but you will see a short acral height. Means ट्रंक और शक्ल इनकी एडल्ट दिखेगी. इसकी उम्र कितनी दिख रही? 30 साल का है. IQ इज ऑल्सो नॉर्मल, बट हाथ पैर छोटे छोटे. एक्रल हाइट इज स्मॉल. इसलिए तो इस पेशेंट के अंदर एडल्ट वाला कैथेटर लगा ही नहीं. तो ये इमरजेंसी में आया था अनकॉन्शियस.
But since it is adult, so they will call MD medicine, not pediatrician. So patient IQ is normal, everything is normal. The only thing is he is having frequent fracture of bone, और अपने आप ठीक भी हो जाता है. बार बार बोन टूटती है, जुड़ भी जाती है. There is ankylosis and pseudo ankylosis in this patient. This is achondroplasia. Then we have Marfan syndrome, brittle bone disease, osteogenesis imperfecta, dystrophica myotonica, adult PCKD, and von Willebrand disease. So these are the MCQs which came के भी आया हुआ है फैप. इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जहां जहां मैंने क्यू लगाया वो क्यू लगा लो. एंड एटलीस्ट रिमेंबर दिस, बिकॉज इंडियन एग्जाम दे विल आस्क यू रिपीट क्वेश्चन. तो पूरी जेनेटिक्स एक तरफ, ये टेबल एक तरफ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके ना, माइटोकॉन्ड्रियल वी हैव डिस्कस्ड, टर्नर सिंड्रोम वी हैव डिस्कस्ड. अब इसको देखो, कभी कभी क्वेश्चन आता है कैरियोटाइप देखने का. हाउ यू कैन सी कैरियोटाइप? कैसे देखो कैरियोटाइप? तो इन कैरियोटाइपिंग व्हाट वी सी, जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस. देखो सीक्वेंस समझो इसको. अगर आपको कैरियोटाइप का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज चेक एनी बॉक्स. कोई बॉक्स दिया है या सर्कल दिया है, सपोज क्रोमोसोम 5 पे सर्कल दिया हुआ है, इट मीन दे आर आस्किंग क्रोमोसोम 5. इफ एनी बॉक्स सर्कल नॉट गिवन, suppose any box circle arrow is not given, then what you will check? Check for common chromosome like 21, 18, 13. 21, 18, 13. 21 क्या है? Drinking age. Drinking age is D for drinking, D for down. 18 is E for 18, E for election age, 18. P for puberty. Then after this, puberty age is 13. After this, just check X and Y. X and Y. So just follow this rule, simple rule. कभी कभी आपको दो एरो होते हैं या दो सर्कल होते हैं. तो व्हेन यू सी टू सर्कल दैट मींस ट्रांसलोकेशन. तो लेट्स सी फर्स्ट फर्स्ट देखो इसको ध्यान से. लुक एट दिस नाउ. यू कैन सी सब में इनको नहीं देखना ये टेढ़ा है, ये सीधा है, लंबा है, इधर नहीं देखना है. दैट इज बेस्ड ऑन. अब इसको देखो. यू कैन सी 22 × 2 44, 45 वाई पे नथिंग है. इसको बोलते हैं एक्चुअल में 45x0. x0 मीन्स देयर इज 45x ओनली. So this means it is Turner. This is Turner. So they ask you few questions on karyotyping. Let us see those questions. बताओ क्या है. Now see, a circle is given on chromosome 5. 5 पे क्या होगा? Either familial adenomatous polyposis या cri du chat. So they will give some history. Suppose they will give you like a 4-year-old child is having cat-like cry, cri du chat syndrome. Suppose a 25-year-old boy is having multiple polyps in the colon, familial adenomatous polyposis. Clear? अब देखो दो एरो दिए ऊपर देखो. ऊपर देखो. कैन यू सी दो टू एरोज आर गिवन. अब देखो पहले देखो. 22 × 2 44, 45, 46. तो ये मेल है फीमेल है? बोथ एक्स आर देयर सो इट्स अ फीमेल. बट ट्रांसलोकेशन यू कैन सी 14, 18. फॉलिकुलर. क्या फॉलिकुलर? फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा. इट इज फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा. बताओ. XXY क्लाइन फिल्टर. दिस इज क्लाइन फिल्टर. बताओ. ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? अभी दिख रहा है. अब बताओ. 7 पे क्या है? एक की एक नहीं है, इसको बोलते हैं मोनोसोमी. अगर तीन होते हैं तो ट्राइसोमी. वी कॉल दिस मोनोसोमी 7. सिंपल. इट इज मोनोसोमी 7. बताओ क्या है.
डाउन पटाओ एडवर्ड। सर्कल एरो है। नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल। अब इसको देखो, अगर डाउन होता तो यहाँ पर दो की जगह तीन होते। एडवर्ड में यहाँ तीन होते, और पटाओ में 13 पे 13 होते। सिंपल। तो दिस कैरोटाइप क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, नाउ कमिंग टू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। So we have two syndrome, Prader-Willi syndrome and Angelman syndrome. So Prader-Willi is due to paternal deletion. Angelman is due to maternal deletion. अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन डिलीशन से नहीं पूछते, दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन डाइसोमी। अगर पापा का जीन डिलीट हुआ है तो मम्मी जीन विल डबल, तो वी कॉल दिस maternal disomy. Similarly here maternal gene is deleted, then father gene will be double, we call this paternal disomy. Then am I clear? So they ask you what are the features. So Prader-Willi syndrome will have obesity, बचपन से ये बच्चा मोटा होगा, congenital obesity. There is hypotonia of muscle, muscle में बिल्कुल टोन नहीं होगी, and patient will have mental retardation. Here you will see patient will have seizures, ataxia. Then you can notice patient will have retardation and inappropriate laughter. Inappropriate laughter. Because of inappropriate laughter, these are called happy puppet syndrome. Happy puppet syndrome. Then ऊपर देखो, look at the screen, try to understand. तो ये याद रख लो, डिलीशन याद कर लेते हैं। तो P4 Prader-Willi, P4 पापा, P4 पैटर्नल। एंजल मैन में M आ रहा है, M4 मैटरनल। और रिमेंबर योर मदर इज योर एंजल। ऊपर देखो, तो पापा सभी के मोटे हो जाते हैं। मम्मी क्या पहनती है? सारी। फिर लिख लिया। तो सीजर्स, अटेक्सिया, तुम क्यों हंस रहे हो? Retardation, inappropriate laughter. Okay. They ask you which syndrome is associated with congenital obesity, Prader-Willi. Congenital obesity. ओके, अब इसको देखो। तो डाउन पटाओ एडवर्ड की इमेज बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आती है। अब आपको कैसे इमेज को देखना है, ध्यान से देखो। देखो, दिस इज पटाओ सिंड्रोम। तो P4 पटाओ, with the P remember, patient will have polydactyly. Polydactyly means if you count their fingers, it will be more than 5. P4 palate. Palate means they will have either palate or lip cleft. तो पटाओ में आपको ये हिंट देखनी। क्लियर? नाउ कमिंग टू एडवर्ड। एडवर्ड सिंड्रोम, अंडरस्टैंड, दे विल हैव ओवरलैपिंग फिंगर। क्या डिफरेंस होगा ओवरलैपिंग फिंगर और पॉलीडेक्टिली में? ओवरलैपिंग मीन्स एक के ऊपर एक उंगलियां, ऐसे। ओवरलैपिंग फिंगर्स, इसलिए
अब देखो पहली गलती कहाँ होती है, रॉकर बॉटम फुट दोनों में होता है। रॉकर बॉटम फुट, इट इज सीन इन बोथ, इट इज मोर क्लासिकल फॉर एडवर्ड बट इट इज ऑल्सो सीन इन पटाव। तो रॉकर बॉटम फुट को आपको नहीं देखना। क्लियर। तो सी क्लेफ्ट लिप पैलेट दिया है क्वेश्चन में, दिस इज पटाव। ओवरलैपिंग फिंगर्स है, देन इट इज एडवर्ड। एम आई क्लियर? ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऊपर देखो, डाउन पटाव एडवर्ड में क्या सिमिलरिटी होती है? दिस इज डी ई पी। अल्फाबेट में पहले डी आता है, फिर ई आता है, फिर पी आता है। ऐसे नंबर में पहले 700 आता है, फिर 7000 आता है। 7 को डबल कर दो तो थोड़ा बढ़ा दो, 15। सो अंडरस्टैंड, इंसिडेंस इज 1 in 700 लाइव बर्थ। 700 में से एक बच्चे को क्या होता है? डाउन। 7000 में से एक बच्चे को एडवर्ड, और 15000 में से एक को पटाओ। विच इज मोस्ट कॉमन? डाउन। Now understand. This is D for drinking age. Drinking age is 21. Election age is 18. Puberty age is 13. Now understand. Now what are the similarities which you will see in all these three? All are trisomies. तो trisomies कब होती है? Due to meiotic non-disjunction. So meiotic non-disjunctions will produce trisomy. तो अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ऑल, आंसर क्या होगा? meiotic non-disjunction। दोनों में ही, तीनों में, सॉरी, तीनों में क्या होगा? पेशेंट विल हैव मेंटल रिटार्डेशन, कुछ ना कुछ जीआईटी के डिफेक्ट होंगे, देयर विल बी सम जीआईटी डिफेक्ट, देयर विल बी सम हार्ट डिफेक्ट, एंड देयर विल बी सम रीनल डिफेक्ट। दीज आर कॉमन इन ऑल। समझ आया नहीं है? तीनों में आईक्यू कम होगा, जीआईटी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, हार्ट में डिफेक्ट होगा। एंड जस्ट रिमेंबर, इन ऑल दीज थ्री दे आर एसोसिएटेड विथ मोर मैटरनल एज, maternal age than paternal age. Maternal age is more important than paternal age. Am I clear? And generally, this is considered more than 30 maternal age. तो गर्ल्स, पेपर तो निकलते रहेगा, तो उसको सब। And generally, it is seen, these trisomies are seen in doctors' kids, या तो डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, सीए, उनके बच्चों को होते हैं। क्यों? पढ़ते रहते हैं, ये 30-35 तक पढ़ते रहते हैं। तो maternal age is more important risk factor than paternal age. Okay, now coming to hypersensitivity. Again, very, very important topic, 5 star topic. एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है, पर ये याद नहीं होती। याद होगी सबको? याद होती है हाइपर सेंसिटिविटी? याद है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, देन टेल मी पेनिसिलिन एलर्जी। वन। उसको देखो ऐसा और इजी कर लेते हैं। ऑल एलर्जी, ऑल एलर्जीज, ऑल बाइट्स, ऑल स्टिंग्स। All allergy, all bites, all stings. Then I can say difficult named test. Difficult named test. जिनके नाम डिफिकल्ट है, these are type 1। समझ आया? ओके, अब इसको देखो। ड्रग एलर्जी, टाइप 1। पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, परफ्यूम एलर्जी। एलर्जी अगर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया टाइप ऑफ एलर्जी। और बढ़ जाती है, देन यू कैन सी रैश इन द स्किन, इसको बोलते हैं हाइव्स।
इफ इट इज प्रोड्यूसिंग सम स्वेलिंग तो आंखें सूज जाती हैं, इसको बोलते हैं एंजियोडेमा। और कभी कभी चोकिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, को बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। तो ये सब किस में आएगी? सी अर्टिकेरिया, एंजियोडेमा, हाइव्स, एनाफाइलैक्सिस, ऑल दिस विल बी टाइप 1। ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा इज ऑल्सो एलर्जी, तो टाइप 1। क्लियर? सारी एलर्जी हो गई। पेनिसिलिन एलर्जी, एग्जाम में आया था। क्लियर? ऑल द बाइट, मॉस्किटो बाइट, टाइप 1। स्नेक बाइट, डॉग बाइट, कैट बाइट, लव बाइट, ऑल बाइट आर टाइप 1। All the bites are type 1. Now coming to all skin stings. Scorpion sting, bee sting, fly sting, type 1. Then difficult named test. अब कौन कौन से टेस्ट के नाम डिफिकल्ट होते हैं? केसनी टेस्ट, थियोबाल्ड स्मिथ फिनोमिना, Schultz and Dale reaction, Schultz and Dale reaction, PK reaction. PK reaction is, ये तो नाम इजी लग रहा है, प्रासोनिस्ट कस्तनर रिएक्शन, प्रासोनिस्ट कस्तनर रिएक्शन। These are type 1. Clear? समझ आया? So type 1 is clear. Now there are two diseases, myasthenia gravis and grave disease. So these are actually type 5, but if type 5 is not given, then answer will be type 2, because type 5 is not given in standard textbook. It's still considered type 2. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आज भी इनको कहाँ दिया होता है? टाइप 2 में। तो सारे टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो डिफिकल्ट नेम टेस्ट किस में हो गए? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर टेस्ट। लेप्रोमेन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, लेप्रोमेन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को और क्या बोलते हैं? मंटोक्स टेस्ट। देन there is a test called patch test. Patch test, this is type 4. Patch test type 4. पैच टेस्ट किसके लिए करते हैं? पैच टेस्ट किसके लिए करते हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक डर्मेटाइटिस के लिए क्या करते हैं? प्रिक टेस्ट। यही तो क्वेश्चन है, यही तो घुमाते हैं वो, देखो। पैच टेस्ट इज फॉर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इट इज टाइप 4। अगर मैं बोलूं प्रिक टेस्ट दिस इज फॉर एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, तो एलर्जी आ गई तो ये कौन सा होगा? टाइप 1, दिस इज टाइप 1। डन? So let's see. Type 5 is clear. Now coming to type 4, tuberculin, lepromin, autoimmune disorders like sarcoidosis, Crohn disease. This is contact dermatitis. Multiple sclerosis, chronic graft rejection, temporal arteritis. देखो chronic किसमें है? टाइप 4। Now coming to hyper acute graft rejection. Hyper acute it is type 2. Type 3 you can remember by a mnemonic sharp. Sharp. Type 3. And type 2 blood group is RH positive. Blood group is RH positive.
टाइप वन हमने पढ़ ली सारी. दिस इज वन इजी क्वेश्चन विच दे आस्क इन एग्जाम. ये गलत नहीं होना चाहिए. अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. Then, okay, now they ask you question on graft. बताओ. Most common graft. There are four types of graft: autograft, allograft, isograft, xenograft. Most common कौन सा होगा? यही गलती होती है, सिली मिस्टेक. कितने लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है तुम में से? ब्लड कितने लोगों ने डोनेट किया है? किसको दिया है ब्लड? आदमी को दिया है, किसी जानवर को दिया है? तो now see, most common graft is allograft, not auto. What is allograft? Same species. Clear? Human to human. लीस्ट कॉमन बताओ, ये भी गलत करोगे तुम. लीस्ट कॉमन. अगर एमसीआई नहीं निकला, बाल चले गए, या दांत टूट गए, कॉर्निया फूट गया, तो कभी कभी एनिमल्स के कॉर्निया, हेयर, स्किन को हम यूज करते हैं. व्हाट इज लीस्ट कॉमन? ट्विंस. ट्विंस मीन्स आइडेंटिकल ट्विंस. दे आर वेरी रेयर. तो व्हाट इज एलोग्राफ्ट? सेम स्पीशीज. व्हाट इज आइसोग्राफ्ट? आइडेंटिकल ट्विंस. मैक्सिमम रिजेक्शन किस ग्राफ्ट में होगा? ग्राफ्ट में. हियर इट इज जीनोग्राफ्ट. बिकॉज एनिमल्स का डीएनए जेनेटिक्स पूरा अलग. लीस्ट चांस ऑफ रिजेक्शन. हु इज मोर क्लोज टू मी, माय ट्विन ब्रदर और माई सेल्फ? So it is autograft. What is xenograft? Xenograft is different species. And autograft is within same body. Same body means one body part to another body part. Like in burn surgery, plastic surgery, right? Burn surgery, plastic surgery. तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है. नाउ ट्राई टू आंसर. कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इन सीएबीजी किस टाइप का ग्राफ्ट है? ऑटोग्राफ्ट. नोज फिलर्स, लिप फिलर्स, ब्रेस्ट एनहेंसमेंट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बर्न सर्जरी, दीज आर ऑटोग्राफ्ट. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एलोग्राफ. बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एलोग्राफ. एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एलोग्राफ. जीनोग्राफ्ट मीन्स एनिमल्स टू ह्यूमन. मीन्स वी आर टेकिंग ग्राफ्ट फ्रॉम एनिमल्स, राइट? तो वही तो लिखा है हमने. वही तो लिखा है ना. नहीं, डिफरेंट स्पीशीज का मतलब वही होता है. तो नाउ अंडरस्टैंड. दे आस्क यू ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड जीवीएचडी, दोनों में डिफरेंस क्या है? आर दे सेम और डिफरेंट? क्या डिफरेंस है बताओ. एक एक नहीं, कौन सा? कौन सा किसमें? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सपोज जी फॉर ग्राफ्ट, G for guest, H for host, H for house. So G for graft. So graft is like a guest. H for host. Host is like your house. Okay? तो बचपन में सबके घर में मेहमान आए, अभी भी आते हैं. तो सपोज आपके घर में मेहमान आए, सो लाइक योर हाउस इज हैविंग 3 रूम्स, 3 बेडरूम्स, या 2 बेडरूम्स.
तो किसका कमरा खाली होता है? बच्चों का। So now this thing, this graft is coming. Suppose, let's say this is graft is not doing any harm. It's just host is not comfortable. गेस्ट आपके कमरे में सो रहा है, तो जो तुम कर रहे थे कमरे में वो नहीं कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं ग्राफ रिजेक्शन। क्लियर? तो ग्राफ रिजेक्शन मीन्स ग्राफ्ट इज ओके, होस्ट इज नॉट कंफर्टेबल। क्लियर? तो मेहमान 2-3 दिन अच्छे लगते हैं। ऑन द अदर हैंड, सपोज सपोज आपके घर में एक गेस्ट आए और वो रोज तुम्हारी सुताई करे, दिस इज कॉल्ड जीवीएचटी। समझ क्लियर? समझ आ गया? विच इज मोर कॉमन। तो कैसे कैसे मेहमान कॉमन आते हैं? ऐसे आते हैं, मोर कॉमन। जीवीएचडी इज रेयर। GVHD was first studied in rat. In rat, we call this runt disease. हंस के रहे तुम? Runt disease. So graph rejection, understand? It is of three types: hyperacute graph rejection. Then it can be acute graph rejection. It can be chronic graph rejection. Hyperacute, acute, chronic. Hyperacute graph rejection, understand? This is a type 2 hypersensitivity. Acute, sometime it can be type 2, sometime it can be type 4. Chronic is type 4 hypersensitivity. अब इसको समझो एक बार। हाइपर एक्यूट मीन्स आज आपने सर्जरी करी, मे बी ड्यूरिंग सर्जरी और विद इन 48 hours इट फेल्ड। वाई इट फेल्ड? इट फेल्ड बिकॉज ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी विद इन 48 hours। एक्यूट, एक्यूट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ टी सेल्स, टी सेल्स बिकम हाइपर एक्टिवेटेड, उसको बोलते हैं एक्यूट। क्रोनिक कब होगा? आफ्टर मंथ, ईयर्स। वाई इट अकर? आर्टीरियोपैथी एंड फाइब्रोसिस। देखो क्रोनिक में क्या होगा, सपोज आपने लीवर ट्रांसप्लांट किया तो उसके आसपास के ब्लड वेसल्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, वी कॉल दिस आर्टीरियोपैथी। क्लियर? Okay, now coming to GVHD. GVHD, which organs are affected? So here you will see these three organs are affected primarily. कौन कौन से? Most common will be skin, then it will be your intestine, then it will be your liver. जो तुम लोग lungs lungs बोल रहे थे वो इसका आंसर है। All are affected in GVHD except lungs. Lungs are rarely involved. It mainly involves skin, intestine, and liver. GVHD, graft versus host disease. Am I clear? Okay, they ask you most important HLA for grafting. कितने HLA मैच करते हैं? HLA A, B, C, DP, DQ, DR. So we match total how many HLA? Six. Six HLA. So most important HLA for transplant will be HLA-D. HLA-D. This is most important because इसके कितने हम मैच कर रहे हैं? 3. So most important will be HLA-D. Okay, then they ask you question on different antibodies. What are the various antibodies? ऊपर से स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। देखो इसको रटना नहीं, समझो। ब्रेन में कुछ होता है, कोई ऑटोइम्यून कंडीशन, और कुछ होता है ब्रेन में? एनी ऑटोइम्यून कंडीशन?
एंटी हु एंटीबॉडी। चलो पैंक्रियास पे आते हैं। एंटी जीएडी, एंटी आईसीए, एंटी जेड एन टी एट, जिंक ट्रांसपोर्टर एट। Then let's talk about intestine. Anti TTG, anti endomysial, anti TPO, TRA, LETS, TSI, TRA, LETS, TSI, ASCA, anti ROLA, anti ROLA, anti PMSCL, anti topoisomerase, anti centromere, एंटी जोवन। बताओ। प्रियंका, सियंका, सियंका, प्रियंका, पीसीएम। याद रखो ऐसे पीसीएम। पीसीएम मीन्स प्रियंका चुर्गस्ट्रॉस माइक्रोस्कोपिक पॉलिएंजाइटिस। आमा बताओ। एएमए, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। पीबीसी, पीबीसी इज प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। एंटी एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर, एंटी मस्क, एंटी LRP4, मायस्थेनिया ग्रेविस। पैटर्न मायस्थेनिया ग्रेविस। एंटी ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बताओ। एंटी हु, मैंने बताया था। बताओ। आई टोल्ड दिस। क्या बोलते हैं इसको? इस पे हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिखा था। लिम्बिक एंसेफेलाइटिस। नहीं बता, नहीं पढ़ा था हमने? ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। लिम्बिक एंसेफेलाइटिस और ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। नहीं नहीं, नहीं पढ़ा था हमने ये? अच्छा, हमने पैथ नहीं पढ़ी थी। एंटी जीएडी, एंटी आईसी, एंटी जेरेंटी एट। विच डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2? एंटी टीटीजी एंडोमाइसिल, सिलैक्स प्रो, टीपीओ। एंटी थायरॉयड रिसेप्टर, लॉन्ग एक्टिंग थायरॉयड स्टिमुलेटिंग, टीएसआई थायरॉयड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्रेव्स। आस्का। क्रॉन्स के अलावा बताओ एक और। क्रॉन्स के अलावा और कहाँ होती है आस्का? तुक्का मारो चलो। बस्कुलाइटिस सही। बेसेट सिंड्रोम, बेसेट सिंड्रोम। एंटी रो ला, एंटी रो is also seen in neonatal SLE. एंटी PMSCL, polymyositis plus scleroderma। एंटी topoisomerase, systemic form, systemic sclerosis। This is CREST syndrome।
डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस। इसको भी देख लो ध्यान से, वन एमसीक्यू इन एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लेना। वन एमसीक्यू दे आस्क ऑन all the antibodies, one antibody name. Okay, now moving to amyloidosis. What is amyloidosis? These are extracellular protein. So they will deposit. So आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी एमिलॉइड कहाँ पर डिपॉजिट करती है? What are the various types of amyloid you know? बताओ। ऊपर देखो, दिस इज कॉल्ड एल। एल का मतलब क्या होता है? एल मीनिंग इज लाइट चेन, दिस इज amyloid light chain. Amyloid light chain, this type of amyloid we also call this primary amyloid. It is seen in multiple myeloma. Multiple myeloma. AA. A means amyloid associated. We also call this secondary amyloid. Secondary amyloid, A amyloid. Where you see this? In chronic inflammation. And most common chronic inflammation which cause this in the world is rheumatoid arthritis. In India it is TB. और कहीं मिलता है? It is also seen in a condition called familial Mediterranean fever. A amyloidosis, familial Mediterranean fever. A beta बताओ. Alzheimer disease. We also call this CNS amyloid. A beta 2 amyloid. A beta 2M. It is also called as dialysis associated amyloid. So we see this in CKD patient. Or they ask you which is renal amyloid. TTR का मतलब होता है ट्रांसथायरेटिन. Transthyretin. This is trans TTR. Understand? This is seen in three conditions. First, we also call this amyloidosis of your heart. हार्ट में क्या कराता है? RCMP, restrictive cardiomyopathy. और कुछ? It is involved in two familial condition. बताओ कौन सी? Senile systemic amyloidosis. पूरा लिखना. Senile systemic amyloidosis. Familial amyloidotic polyneuropathy. Senile systemic amyloidosis. Familial amyloidotic polyneuropathy. Senile systemic amyloidosis. Familial amyloidotic polyneuropathy. A CAL. CAL is calcitonin. This is seen in MTC. It is islet associated polypeptide. This is amyloidosis of your pancreas. We see this in a patient of diabetes mellitus. And this is called as isolated atrial amyloid. It is seen in your atria. So these are different types of amyloid which you have to remember. Exam purpose, what are important? Let's see. AL is important, A is important, A beta 2M, and ATTR. These five are very, very important. Done. Okay, now coming to immunodeficiency state. अब इसको समझो पहले एक बार. So there are two types of immunodeficiency. First is primary and secondary. Primary means बचपन से immunity weak है.
Secondary means acquired. Like example of secondary, HIV, diabetes, TB, any disease, or pregnancy also. Pregnancy is also a state of immunocompromisation. So what are primary? In exam, they ask you primary immunodeficiency state. So just I'm writing examples here. First is selective IgA deficiency. Selective IgA deficiency. Hyper IgM. Hyper IgE. It's also called as Job syndrome. Bruton's A gamma globulinemia. Bruton's A gamma globulinemia. मैं स्पेलिंग इसकी गलत लिख रहा हूँ जान के. विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. और कोई? एनी अदर यू नो? Cardiac Higashi syndrome. Cardiac Higashi syndrome. Wiskott Eldridge syndrome. CVID. Common variable immunodeficiency. Common variable immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. SCID. Severe combined immunodeficiency. Common variable immunodeficiency. अब इन सबको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग. बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? कहाँ मैच्योर होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो. कहाँ मैच्योर होते हैं? थाइमस. तो एक और लिखो. डी जियोट सिंड्रोम. डी जियोट सिंड्रोम. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसको पहले समझ लो. लेट मी से वी हैव बी लिम्फोसाइट्स. इसको देखो एक बार. बी lymphocyte will provide your humoral immunity. Means how this will proliferate to produce plasma cells. बी lymphocytes किस में कन्वर्ट होते हैं? प्लाज्मा सेल्स. For this conversion they need a gene. That gene is called as BTK. BTK stand for Bruton's tyrosine kinase genes. This plasma cells will produce one antibody. That is the only antibody produced initially. This antibody is IgM. क्या बोलते हैं इसको? IgM. Then this IgM will convert into different class depending on the need. जरूरत के हिसाब से IgM अपनी क्लास को चेंज करेगी. Suppose if it is an acute infection, it remain IgM. If it is chronic, it will become IgG. If it is mucosal infection, IgA. It can convert into itself IgM, IgD, और अगर कोई एलर्जी है तो IgE. तो IgG, अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये सीक्वेंस में लिखा है. It is not gamed, it is gummed. Why gummed? Because this is a sequence from maximum amount to least amount. तो सबसे बॉडी में ज्यादा क्या होती है और सबसे कम? तो which antibody is present in maximum amount? IgG. समझ आ गया? Now try to understand. पहले देखो व्हाट इज फर्स्ट डिसीज. पहले डिसीज क्या लिखी है आपने? सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी. बॉडी में सब कुछ है, बस ये नहीं है. IgA नहीं है. तो IgA नहीं है तो पेशेंट को क्या होगा? बार बार म्यूकोसल और सीक्रेटरी सरफेस का इन्फेक्शन होगा. क्लियर? समझ आ गया? तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है. जस्ट रिमेंबर दिस इज मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल. एक लाइन लिख दो बस. आउट ऑफ दिस मोस्ट कॉमन विल बी सिलेक्टिव IgA. समझ आ गया ना? डन. अगला देखो. लुक एट द स्क्रीन नाउ. सेकंड इज व्हाट व्हिच आई हैव रिटन. हाइपर IgM और IgE. ऊपर देखो. बी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं?
Plasma cells converting into IgM will convert into, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग. When IgM is converting into different class, we call this class switching और isotype switching. तो IgM किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ऊपर, अलग अलग एंटीबॉडी में. अब IgM ने कन्वर्ट होने से मना कर दिया. समझ आया? तो IgM तो ज्यादा है, बाकी एंटीबॉडी कम. समझ आया नहीं आया? लुक एट द स्क्रीन. हाइपर आईजीएम में आईजीएम तो ज्यादा है, बट ऑल अदर एंटीबॉडी विल बी लो. तो एक सब्जेक्ट पढ़ के, सपोज मेडिसिन पढ़ ली, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, पास हो जाओगे. समझ आया? तो दिस इज हाइपर आईजीएम. समझ आया नहीं आया? तो लिखो यहाँ पर हाइपर आईजीएम, ओनली आईजीएम इज मोर, ऑल अदर आर लेस. ओनली आईजीएम इज मोर. अब इसको देखो, थर्ड, बी सेल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा से कन्वर्ट इनटू आईजीएम, आईजीएम के बाद क्या होगा, क्लास स्विचिंग. तो सारा का सारा आईजीएम किस में कन्वर्ट होगा, आईजीई, 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 आईजीई. तो यहाँ पर क्या ज्यादा है, बाकी सब कम. अगेन साइकेट्री अकेले पढ़ के पास हो जाओगे. सो आईजीई इज मोर, ऑल अदर आर लेस. सो ओनली आईजीई इज मोर. डन? समझ आया? ओके, अब अगला देखो, ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया. तो यहाँ पर डिफेक्ट इधर होगा, यू विल सी डिफेक्ट हियर. वेयर डिफेक्ट, बीटी के जीन. बीटी के जीन में डिफेक्ट होगा तो नो प्लाज्मा सेल्स, नो आईजीएम, no class switching, no any antibody. So A gamma globulinemia means absent. All antibodies are absent. Here you will see all antibodies are absent. कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. अब इन चारों में से मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक विच इज मोस्ट डेंजरस? प्रोटॉन्स. विच इज लीस्ट? आई सेलेक्टिव आईजी. दिस इज लीस्ट डेंजरस इन चारों में से. ओके ना, मूविंग टू विस्कॉट एल्ड्रिच. मैंने कुछ बताया था, ट्रायड, फीवर, इचिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो लिख दो दोबारा, फीवर, इचिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. Fever, itching, thrombocytopenia, and this is due to WASP gene mutation. WASP gene. अब देखो आगे, we have B lymphocyte, T lymphocyte, and we have NK cell. अगर NK cell का डिफेक्ट होगा, इसको बोलते हैं चिड़िया की गैशी सिंड्रोम. So it is NK cell defect due to mutation in list gene. अब इससे देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं. That question is, they ask you NK cells, if you want to diagnose, then you will see in the cytoplasm. Normally we see small granules, लेकिन यहाँ पर कैसे मोटे मोटे granules होंगे. What we call this? We call this large granules or giant granules in cytoplasm. So they ask you giant granules in cytoplasm. These are seen in Chidiakigachi syndrome. ऊपर देखो, CVID, क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? कॉमन वेरिएबल. तो देखो, इट इज आइदर बी और टी सेल डिफेक्ट. या तो बी का डिफेक्ट होगा, कुछ बच्चों में बी का, कुछ में टी का, बट नॉट बोथ. बच्चों ने पढ़ा था ना, आइदर और. या तो बी का होगा या टी का होगा, दोनों का नहीं होगा. बट इसमें क्या होगा, बोथ बी एंड टी. बोथ बी एंड टी. तभी नाम क्या है इसका, सिवियर कंबाइंड. अब इसको देखो, द स्किड occurred due to mutation of a gene called, deficiency of an enzyme called ADA.
एडिनोसिन डीएमिनेज डिफेक्ट, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफेक्ट। अब इसको देखो, जनरली दीज बेबीज, इनकी बॉडी में बी सेल टी सेल है ही नहीं, तो 2 से 10 दिन में इनकी डेथ हो जाती है। तो दीज आर केप्ट इन आइसोलेटेड वार्ड, तो दे आर अल्ट्रा प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन। हम इनको बोलते हैं बबल बेबी सिंड्रोम। सो व्हाट इज बबल बेबी? लाइक एन एयर बबल। देखो इसको, अगर आप एयर बबल को टच करोगे तो वो फूट जाता है, ऐसे इन बेबी को अगर आप टच करोगे तो उसको रैश पड़ जाएगी। तो व्हेन यू वांट टू मीट दिस बेबी यू विल वियर पीपीई किट। आप बिना ग्लव्स के, बिना पीपीई किट के इन बच्चों से नहीं मिल सकते। दे आर केप्ट इन आइसोलेटेड वार्ड। नाउ कमिंग टू डी जॉर्ज syndrome. D George syndrome, understand this thing. There is hypoplasia of thymus. The symptom you can remember by mnemonic catch 22. There will be cleft lip, abnormal faces. ओके, अब मुझे बताओ, थाइमस अगर छोटा है तो क्या होगा? टी सेल्स बनेंगे नहीं बनेंगे? तो वी गेट immature T cells. Immature T cell. Then patient will develop cardiac defect. They ask you which is most common cardiac defect. It is TOF. This question came in your exam. Tetralogy of Fallot. H is hypocalcemia. Hypocalcemia क्यों होगा? Because parathyroid will be less. And 22 is 22q minus. Means deletion at long arm of chromosome 22. Catch 22. Is it there? So this is about your immunodeficiency state. Am I clear? Okay, now let's talk about some names. And these are the buzzwords, or I can say hint in the exam. ऊपर देखो, एबनॉर्मल साइज को बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। एबनॉर्मल शेप को क्या बोलते हैं? ये दोनों कहाँ मिलती है? विच एनीमिया? इट इज जनरली सीन इन आईडीए। मैंने आपको बताया था, इनको अगर आपको सीबीसी में देखना है, सीबीसी में एक पैरामीटर बढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको? आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अगर आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है तो सेल्स कैसी है? एबनॉर्मल शेप एंड साइज के। ओके, नाउ लुक एट दिस, इलिप्सॉइडल। इलिप्सॉइडल मींस लाइक दिस, एंड स्पेरिकल मींस स्पेरिकल। आरबीसी का शेप अगर फुटबॉल के जैसा हो जाए, इट इज हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। रग्बी बॉल के जैसा हो जाए, इलिप्टोसाइटोसिस। सो इलिप्टोसाइटोसिस इज मेनली a defect of spectrin, and hereditary spherocytosis is mainly a defect of। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पिरोसाइटोसिस, देन आंसर इज AIH। मोस्ट कॉमन कॉज विल बी AIH, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। इसको बोलते हैं टारगेट सेल। तो व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ सेल वी कॉल दिस टारगेट सेल। तो T फॉर टारगेट सेल, T फॉर थैलेसीमिया, सिंपल। Acanthocyte not that important, is not important. Now coming to cystocytes. Cystocytes are called helmet cells. Cystocytes also called as helmet cells. These are broken fragment of RBCs. They are seen in MAHA. बट देखो पेपर में महा नहीं आता, पेपर में क्या पूछते हैं? टीटीपी HUS, टीटीपी एंड HUS। Bite cells, this is P deficiency. Then you can see RBC like a drop of tear. We call them teardrop cells. Teardrop cells, where else we see thalassemia and myelofibrosis. Sickled RBC, ड्रिपेनोसाइट्स, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी एक के ऊपर एक ऐसे जमा हो जाएंगे, वी कॉल दिस रोले फॉर्मेशन, मल्टीपल माइलोमा।
अब इसको देखो, दीज आर टू बॉडीज, सपोज लेट से दीज आर आरबीसीज। ऊपर देखो ध्यान से। अब दोनों का इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको, दे कैन गिव यू अ स्लाइड। Heinz bodies means these are denatured hemoglobin, so this will look red or pink in color. Howell Jolly body, it is nuclear remnant, it will be blue in color. समझ आया? हाइंस बॉडी क्या है, हीमोग्लोबिन है तो पिंक दिखेगी। हॉवल जॉली बॉडी कैसे दिखेगी, ब्लू। पैपनीमर बॉडीज, दे आर seen in sideroblastic anemia and post splenectomy. Ring cell sideroblastic and basophilic stippling lead poisoning as well as sideroblastic. So these are some peripheral smear hint which they give in exam. Is it clear? Now let's see what else they ask you. Spirocytes. अब बताओ मुझे कौन सा स्पिरोसाइट्स है। दिस इज हेरिडिटरी स्पिरोसाइट, दिस इज हेरिडिटरी। लेबलिंग कर लो इलेप्टोसाइटोसिस। आगे इसका जो पार्ट होगा मेडिसिन वाला, उसमें हम पढ़ेंगे इनकी थ्योरी। जस्ट नाउ लुक एट द स्मीयर फाइंडिंग। ओके, नाउ सी दिस वन। दिस इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। When you see more than 5 segment of neutrophils, अगर न्यूट्रोफिल्स के 5 से ज्यादा सेगमेंट है, उसको बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। एंड इट इज सीन वेयर इन B12 एंड B9 डेफिशिएंसी। दोनों में मिलेगा, दोनों में। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, B12 एंड B9 डेफिशिएंसी। रोले फॉर्मेशन यू कैन सी। आरबीसी एक के ऊपर एक क्लम्प जमा। वी ऑल्सो कॉल दिस स्टाक ऑफ कॉइन अपीयरेंस। रोले फॉर्मेशन, और वी कॉल दिस stock of coin appearance, where we see multiple myeloma. Okay, now see, इसको देखो। You can see RBCs are having a cleft, means बीच में kidney shape दिख रही है। This is what we call this stomatocytosis. So this can be inherited, and sometimes it is seen due to excess alcohol consumption. This is target cell. Target cell, so T4 target, T4 thalassemia. Thalassemia. This is chipmunk faces. Chipmunk face किस में मिलता है, thalassemia, but it can also be seen in sickle cell anemia. Sickle cell anemia. This is papillomamer bodies. Papillomamer bodies you will see where in sideroblastic anemia. Okay, अब इसको देखो दोनों को। Try to understand, this is called echinocytes or burst cells. तो ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ऊपर। You can see these are this type of spike spicules or projections above the RBCs. So this we call them echinocytes or burst cells. It is seen in CKD patient and AKI patient. CKD AKI, or you can simply call uremia. CKD AKI. Acanthocytes, अंडरस्टैंड। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस यू कैन सी। यहाँ पर भी स्पिक्यूल्स हैं। इफ यू सी हियर स्पिक्यूल्स आर मोर प्रोमिनेंट, दे आर मोर प्रोमिनेंट। इट इज कॉल्ड स्पर सेल्स। इट्स आल्सो सीन इन renal disease and A beta lipoproteinemia. हॉवल जॉली बॉडी क्या होती है, मैंने आपको बताया था। आरबीसीज आर एन्यूक्लिएटेड। व्हाई दे आर एन्यूक्लिएटेड, बिकॉज आरबीसीज जैसे जैसे मैच्योर होते हैं न्यूक्लियस गायब हो जाता है। अगर किसी आरबीसी में न्यूक्लियस का रेमनेंट रह गया, देन दिस इज स्प्लेनिक मैक्रोफेज। याद आ रहा है कुछ? इट इज लाइक पजेसिव बॉयफ्रेंड, इट विल रिमूव द न्यूक्लियस। लेकिन अगर आपने स्प्लीन निकाल लिया,
No spleen means splenectomy. This is splenic macrophage. If you remove the spleen, no macrophage. No macrophage means this nucleus remnant will persist, and this nucleus remnant is called Howell Jolly body. So this is seen where in those patients who don't have spleen, asplenia, or you can say postplanectomy. Asplenia or postplanectomy. Done. Asplenia or postplanectomy. This is teardrop cells. Teardrop cells where you will see thalassemia and myelofibrosis. This is stippled RBCs. देखो, stippled RBC means they can change the terms. They can use stippled RBCs or they can simply called basophilic stippling. They can simply called basophilic stippling. Basophilic stippling. So it is seen where in sideroblastic anemia. In sideroblastic anemia. Okay, this is myelofibrosis. Myelofibrosis. Heinz bodies. Heinz bodies, understand? Heinz bodies, these are denatured or precipitated hemoglobin. Denatured hemoglobin. And these Heinz bodies, understand? These are seen where? In G6PD deficiency. For Heinz body, we need a supravital stain. Normal stain में नहीं दिखती. So these are seen by supravital stain. Okay, ये क्या बताओ? What it is? It is not bite cell. What you can see? Bite cell is it's bite cell. क्या है ये? Bite cells. Bite cell means macrophage will take a bite. So both these science body bite cells you will see where in GCP deficiency. Okay, now see, look at this. इसको बोलते हैं पेल्गर हुएट anomaly. You can see it is having headphone like or spectacle like arrangement. So this is something which we see in MDS, myelodysplastic syndrome. Myelodysplastic syndrome. This is Dole bodies. So Dole bodies you will see in MDS, and sometimes you can see this in chronic inflammation. Dole bodies. So this is Dole bodies. Okay, giant granules देखो, ये बड़े बड़े granules दिख रहे हैं. Where giant granules? चिड़िया की गैसी. Full form लिख देना. CH write down चिड़िया की गैसी. Giant granules, चिड़िया की गैसी syndrome. Now see, this is reticulocyte, and you can see for reticulocyte we need a blue stain. तो कौन सी stain है ये? Brilliant crystal blue, also called as new methylene blue. Brilliant crystal blue, also called as new methylene blue. New methylene blue. Okay, now let's see. This is AML. AML means acute myeloid leukemia. Acute myeloid leukemia. कितने types होते हैं? What are important types? Most common type. Most common type is M2. In M2 you will find chloroma. Most important type M3 को क्या बोलते हैं? APML. Acute promyelocytic leukemia. Here you will find maximum DIC, maximum oil rods, maximum oil rods. M3 type is associated with a translocation. कौन सा translocation? 922 CML में था. 1517.
Translocation 15, 17. This will code for RAR gene, retinoic acid receptor gene. तो कभी कभी इसको बोलते हैं APML RARA. RAR gene mutation means retinoic acid. How you will manage? कैसे ठीक करोगे? 18 और 18 से ठीक नहीं हुआ तो we give arsenic trioxide. Arsenic trioxide. M4, M5 type. These are involving gums. They ask you gum infiltrate, gingival hyperplasia is seen where? In M4 and M5. अगर दोनों में से एक चूज करना है तो remember M5 is better than M4. M7 is something which is associated with Down syndrome. Down syndrome. So when you do biopsy, in biopsy you will find these cells. These cells in AML, what we call them? Fagot cells. And this is oil rods. This is oil rods. Then oil rods. Okay, now coming to CML. तो CML को समझो एक बार. In CML generally they ask you three stages of disease. क्या stages होती है? What are three stages of disease? First is called chronic stable phase. Chronic stable phase. Second is accelerated phase. Accelerated phase. And third is blast crisis. Blast crisis. इसको समझो एक बार. Chronic stable phase means if you see in this stage patient symptom कैसे होंगे patient को? Symptoms are either absent या तो होंगे नहीं, or you will see minimal symptom. Minimal symptom. Accelerated phase you will see symptom will increase. Symptom will present. In blast crisis you will see there will be a lot of symptom. तो पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. सिम्टम सीबीसी देखोगे तो in CBC you will see a lot of increase in WBC count. Now understand this thing. In chronic stable phase, if you see blast number, कितना होगा blast number? Less than 10%. In accelerated phase, you will see blast number will be 10 to 19%. And in blast crisis, you will see it is more than 20%. ऊपर देखो. Acute leukemia की definition क्या होती है? Blast cells more than 20%. तो इसको तो अब acute बोलेंगे. So in blast crisis, what is happening? In blast crisis, the CML is converting into AML. CML किस में कन्वर्ट हो रहा है? AML में कन्वर्ट. इसको बोलते हैं blast crisis. Okay, so understand this thing. CML, like you know, it is having a translocation. कौन सा translocation था? 922. We call this Philadelphia chromosome. So how we manage? देखो first generation drug. This is first generation drug. We call this imatinib. Imatinib. First generation TKI. TKI means tyrosine kinase inhibitor. Then we have DNB. This is second generation TKI. And what we have? We have third generation TKI, that is your ponatinib. And we have a new drug, omacitaxin. So these are what? These are examples of tyrosine kinase inhibitor. Tyrosine kinase inhibitor. Tyrosine kinase inhibitor. Then, okay, जो staging का नाम याद रखना है आपको. CLL की staging, it is Rye and Binet staging. Rye and Binet staging. CLL से क्या क्वेश्चन पूछते हैं? Understand this thing. The CLL is something which is associated with SLE.
AIH, AIH, SLE। ओके, तो CLL देखो, CLL sometime it can convert into DLBCL। What we call this? इसको क्या बोलते हैं? रिच्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्यों होता है? Understand this thing. CLL is also having lymph node involvement. Then what we call this? SLL. SLL means small lymphoblastic lymphoma. So CLL generally it is manageable. So how we manage? Which drug we give in CLL? कौन सा देते हैं? फ्लूट्राबिन। फ्लूट्राबिन। लेकिन कभी कभी ये CLL किस में कन्वर्ट हो जाता है? DLBCL। DLBCL। ओके, नाउ कमिंग टू नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो फर्स्ट इसको देखो, ओवरऑल विच इज मोर कॉमन। अगर आप देखोगे ब्लड मेलिग्नेंसी में, दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन योर एग्जाम, ये पाई चार्ट हरिसन में दिया हुआ है। इन ब्लड मेलिग्नेंसी यू विल सी विच इज मोर कॉमन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। So 62% people will have non-Hodgkin lymphoma. Then you can say what is common? Plasma cell disorder. Plasma cell disorder means multiple myeloma. Then we have CLL, Hodgkin, ALL. Now coming to this, हमने पढ़ लिया था already. We have studied this microbiological carcinogen. Same thing. देखो सारे क्वेश्चन इसमें से पूछ चुके हैं, अभी जो बच रहा है वो सिर्फ ये बच रहा है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस केम इन एग्जाम। सो ये क्वेश्चन या तो तुम्हारे पेपर में आएगा या इस साल के नेट पीजी में, ट्रस्ट मी। ऑल अदर क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड, बाकी सब पूछ लिया है, यही बचा हुआ है। क्लियर? स्टेजिंग फॉर लिम्फोमा इज एन आर्बर स्टेजिंग। एन आर्बर स्टेजिंग। तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, देखो। सपोज स्टेज वन, इट इज एनी वन lymph node। Any one lymph node is involved, we call the stage one, right? Suppose you can see two lymph node, two or more lymph nodes, right? But on same side of diaphragm, on same side of diaphragm. Here you will see two or more than two on both side of diaphragm. And stage four is diffuse disease, means multiple lymph node involved. So एक lymph node involved है तो stage one, same side दो से उससे ज्यादा है तो stage two, more than two on both side of diaphragm, stage three, and diffuse disease is called as stage four. This is staging for all the lymphomas. अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लाइक व्हाट इज सेंटिनल लिम्फ नोड? क्या होती है सेंटिनल लिम्फ नोड? इट इज फर्स्ट लिम्फ नोड दैट ड्रेन लिम्फ। इसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड, फर्स्ट लिम्फ नोड, देन सेंटिनल लिम्फ नोड। ओके, देन दिस इज योर अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया। व्हाट यू कैन नोटिस हियर, देखो ध्यान से, फ्लावर शेप्ड न्यूक्लियस। किससे होता है? इट इज ड्यू टू विच वायरस? HTLV1। यू कैन सी फ्लावर शेप्ड न्यूक्लियस। वो याद है? रिच पुअर के भूल गए? आज के लिम्फोमा याद है? आज के नॉन आज के याद है ना? ओके, नाउ कमिंग टू मल्टीपल माइलोमा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, ये MCI का फेवरेट टॉपिक है। तो फर्स्ट इज, लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन व्हिच दे आस्क इन एग्जाम। मल्टीपल माइलोमा कैसे डायग्नोस करोगे? क्लोनल प्लाज्मा सेल्स मोर देन 10%। ल्यूकेमिया के लिए 20 चाहिए, यहाँ पर 10। और
बायोप्सी प्रूवन प्लाज्मासाइटोमा प्लस क्रैब फीचर। क्या होता है क्रैब? सी से लिखो कैल्शियम इंक्रीज, आर फॉर रीनल इन्वॉल्वमेंट, ए फॉर एनीमिया, बी फॉर बोनी लाइटिक लीशन। तो इन क्रैब फीचर को हम और क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल दिस माइलोमा डिफाइनिंग इलनेस, एमडीआई। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्रैब ने लिखा होगा, क्या लिखा होगा? माइलोमा डिफाइनिंग इलनेस, माइलोमा डिफाइनिंग इलनेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एमसीक्यू दे आस्क यू इन एग्जाम। कैल्शियम, रीनल, अनीमिया, बोनी लाइटिक लीशन, बोनी लाइटिक लीशन। ओके, तो मुझे बताओ पेशेंट का ईएसआर कैसा होगा? ईएसआर इज इंक्रीज, जनरली इट इज मोर देन 100। अल्कलाइन फॉस्फेटेस कैसा होगा? अल्कलाइन फॉस्फेटेस कैसा होगा? यही क्वेश्चन बार बार आता है। नॉर्मल, एएलपी इज नॉर्मल इन मल्टीपल माइलोमा। कैल्शियम बताओ, अभी तो लिखा है हमने क्रैप फीचर में, तो पेशेंट विल हैव हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम विल इंक्रीज। ठीक, ईएसआर हो गया, एएलपी हो गया, कैल्शियम इंक्रीज। देन व्हाट दे आस्क यू, दे आस्क यू व्हाट यू विल फाइंड इन यूरिन। बेंस जोन्स प्रोटीन्स, बेंस जोन्स प्रोटीन, these are made up of light chain, these are made up of light chain, we call this Benz Jones proteinuria, right? Benz Jones proteinuria। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बी सेल्स कन्वर्टिंग इनटू प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल का ट्यूमर है, तो मोर प्लाज्मा सेल्स, मोर प्लाज्मा सेल्स मींस मोर आईजीएम। तो कभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, मोर आईजीएम मींस, सी लेट्स सी दिस, मल्टीपल माइलोमा कहाँ का ट्यूमर है? इट्स द ट्यूमर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। So here we have more plasma cells. More plasma cells means, understand this thing. It's a tumor here. You can see more plasma cells. More plasma cells means more IgM. More IgM means more class switching. So all antibodies will be more. So patient की body में antibody ज्यादा होती है, but they are not a fully mature antibodies. तो patient की antibody ज्यादा है। Antibodies क्या होती है? Antibodies are immunoglobulins. So these are basically your proteins. तो प्रोटीन अगर ब्लड में ज्यादा है तो प्रोटीन शेक बन जाएगा। सो ब्लड कैसा हो जाएगा? प्रोटीन शेक कैसा होता है? थिक होता है। तो पेशेंट विल हैव हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। तो कुछ पेशेंट आपको बोलेंगे मुझे एकदम से आंख से नहीं दिख रहा है, बिकॉज आंख का ब्लड कैसा हो गया? द रेटिनल आर्टरी ब्लड इज थिकर। और समटाइम दे विल हैव थ्रोम्बस फॉर्मेशन, डीवीटी, क्लॉक्स बनते हैं, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। ओके, देन व्हाट दे आस्क यू इन मल्टीपल माइलोमा, दे आस्क यू लाइक दीज पेशेंट, तो हाउ यू मेक अ डायग्नोसिस? यू कैन डू सिंपल एक्सरे। एक्सरे कहाँ का कराओगे? स्पाइन का और स्कल का। हियर यू विल फाइंड लाइटिक लीशन, lytic lesion. Then we can do SPEP, SPEPs, serum protein electrophoresis. Here you will find M spike. M spike you will find in IgG area and sometime in IgA area. M spike is not an IgM. M spike is not an IgM. This is actually, I can say, how we can make a diagnosis. देखो डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका तो क्या है? बायोप्सी है। बायोप्सी अगर नहीं ऑप्शन में, देन वी कैन चूज एसपीईपी। एसपीईपी। अब आपसे क्वेश्चन पूछते, सपोज यू नो इट इज मल्टीपल माइलोमा, फॉर स्टेजिंग व्हाट वी डू। अब आपको स्टेज कैटेगराइज करना है कि डिसीज सीवियर है या नहीं है, क्या कराओगे स्टेजिंग के लिए?
आपको देखना है एक्सटेंट ऑफ डिसीज, तो किसी भी ल्यूकीमिया में अगर आपको एक्सटेंट देखना है तो क्या कराओगे? पेट स्कैन। फॉर स्टेजिंग व्हाट वी डू? पेट स्कैन। वी विल डू पेट स्कैन। क्लियर? Then these are the findings they ask you in exam. Mott cells, Russell bodies, Dutcher bodies. Mott cells, Dutcher bodies, Russell bodies. These are findings that we see in multiple myeloma. एक रूले formation हमने पढ़ लिया था already. Okay, let's see meningioma. Meningioma, they ask you tumor originating from arachnoid villi. Meningoepithelial cells of arachnoid villi. Then what else they ask you? You will find here some bodies. Patient will be asymptomatic or seizures. And what is important? This is a tumor which is commonly seen in females. Why? Because of progesterone. Progesterone, not because of estrogen. Hemangioblastoma, just remember, it is seen in a patient with von Hippel-Linde disease. Von Hippel-Linde में कुछ और होता है? Any other cancer? It can also cause RCC. श्वानोमा कहीं पढ़ा था हमने? कहाँ पर? देखो श्वानोमा को आप ENT में पढ़ते हो. In ENT we call this acoustic neuroma. We call this acoustic neuroma. This is most common CP angle tumor. CP angle is cerebellopontine angle tumor. And the schwannoma, understand this thing, bilateral schwannoma, they are associated with NF1 or 2, NF2. कुछ याद आ रहा है बायोप्सी में कैसी बॉडीज मिलती हैं? Verroque bodies. And this Verroque bodies will have Antony pattern. Antony A, Antony B pattern. Oligodendroglioma. क्या बोलते हैं इसको? Non-Wedge tumor. Non-Wedge tumor means fried egg, chicken wire pattern. Fried egg, chicken wire. Then they ask you mutation. Which gene mutation is seen? It is IDH1 gene mutation. IDH1 gene mutation in oligodendroglioma. Oligodendroglioma. Okay, temporal arthritis. क्या याद रखोगे? It is associated with polymyalgia rheumatica. Then just remember rule of 60. What is 60 rule? Female more than 60, ESR more than 60, and treatment will be 60 milligram prednisolone daily. Daily. How we make a diagnosis? Long segment biopsy. Long segment biopsy. Takayasu. Takayasu, understand? Takayasu, generally what they ask you, we also call this pulseless disease. So patient will have weak pulse in lower limb. We call this pulseless disease. Sometimes they ask you a cardiology question. You will find here radiofemoral delay. Radiofemoral delay. And Takayasu is something which is seen in young patient. Young means patient will be under 50. 50 से कम होगा patient. And it can cause renovascular hypertension. So treatment तो same है steroid. Diagnose कैसे करोगे इसको? Takayasu is involving non-specific branch of aorta. तो aorta की biopsy नहीं करोगे. What we do? CT angio. CT angio. This is a test that we do for Behcet syndrome. Behcet syndrome. We also call this Silk Road disease. Behcet syndrome. So you will see most common will be oral ulcers, but most specific will be genital ulcers.
ओरल अल्सर्स होंगे रिकरेंट, दैट अल्सर होंगे, एंड पेशेंट विल हैव आई फाइंडिंग्स मींस यूवीआइटिस, एंड दिस टेस्ट वी कॉल दिस पैथोलॉजी टेस्ट। बेसिस सिंड्रोम में मैंने आपको अभी एक एंटीबॉडी बताई थी, अभी एक एंटीबॉडी बताई थी, आस्का, आस्का। Understand basic syndrome, understand this thing. HLA, they ask you an exam. HLA is B51. HLA is B51. Treatment is steroid. ओके, ये क्या बताओ? ये फाइब्रोइड नेक्रोसिस है, तो ये कौन सी वस्कुलाइटिस होगी? पान, पान, राइट? Fibroid necrosis. Now in PAN, what they ask you polyarteritis nodosa. These patient, if you see, this PAN is not involving lungs. It will not involve lungs. Then remember, it is associated with hepatitis B. So PAN will increase risk of hepatitis B. ये क्या है? कावासाकी। कावासाकी से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट इज दे आस्किंग क्वेश्चन ऑन कंजंक्टिवाइटिस। कैसी कंजंक्टिवाइटिस होती है? नॉन प्यूरुलेंट। नॉन प्यूरुलेंट मीन्स देयर इज नो पस। Then what they ask you, patient will have strawberry tongue, and remember in long term there is risk of aneurysm and MI. Why? Because there is an antibody. Which antibody? Anti endothelial antibody. Anti endothelial antibody. तो ट्रीटमेंट में क्या दोगे? IVIG एस्पिरिन. So drug of choice will be IVIG. IVIG. This is tau. Tau or Berger disease. So what you have to remember in Berger disease, there is history of heavy smoking. What else? This is start with artery, then it will go to vein, then it will affect your nerves. Artery, vein, nerve. So patient will have neuropathy symptom. Neuropathy symptom means patient को claudication होगा, एकदम से पेन होगा, numbness, tingling sensation होगी. इसलिए artery, vein, nerve. How you will manage? कैसे ठीक करोगे? What drug we use? क्या देते हैं इसमें? कोई बोल रहा था लेस देन 50, ऐसा नहीं है. इट कैन ऑल्सो कर इन दोज पीपल अबव 50 भी होती है. मोस्टली सीन इन यंग स्मोकर्स, बट इट कैन सीन इवन लेटर ऑल्सो. अगर किसी ने सपोज 40 पे स्टार्ट करी है तो उसको भी हो सकती है. तो हाउ विल मैनेज? विच ड्रग वी यूज? स्मोकिंग सेसेशन. क्या दोगे? च्युइंगम? क्या दोगे फिर? तो वी फर्स्ट गिव एंटीऑक्सीडेंट, पेंटॉक्सीफाइलिन. बताया था मैंने, तब भी तुमने आंसर नहीं किया, तब भी नहीं कर रहे हो ये. पेंटॉक्सीफाइलिन कहीं और देते हैं ये. पेंटॉक्सीफाइलिन, अल्कोहल हेपेटाइटिस. Then we can advise the patient for smoking cessation, like you can use varenicline, bupropion, but no NRT. Nicotine chewing gums, nicotine therapy is contraindicated. Churg-Strauss syndrome. How we diagnose? Priyanka. And how we treat? Steroid. Then they ask you this question, HSP. So baby will have rash in buttocks, thighs. So there will be rash. Then you can see patient will have abdominal pain. And sometimes there will be hematuria. HSP is associated with IgA nephropathy. IgA nephropathy. और ये क्या दिख रहा है आपको? You can see a depression in the nose. It is called saddle nose. And saddle nose we see where?
वैगनर्स, देखो वैगनर्स में जो आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग है उसमें सबसे बड़ी हिंट होती है एमसीक्यू में, कैविटी। लंग्स के अंदर कैविटी इज बिगेस्ट हिंट। दे आर आस्किंग यू क्लिनिकल केस like a patient having cavitation in the lungs, right? And antibodies, ट्रीटमेंट में क्या दोगे? स्टेरॉइड नहीं देते यहाँ। साइक्लोफॉस्फामाइड, बताया था ना, वैगनर्स की जगह वैकेनर्स। C4 सियंग का, C4 साइक्लोफॉस्फामाइड, C4 कैविटी। So this is about your review of pathology. Now let's come back to our main subject, medicine. ब्रेक चाहिए?